जैसे आप मुझे कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सो मैं हूँ ज़ैबा शेख। सो आज मैं, जैसे कि आप देख लो, आज मैंने इंडियन वेयर किया है कपड़े। सो आज मैं कुछ इंडियन मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, जो कि नॉर्मल, ज़्यादा हैवी इस तरीके का नहीं हुआ। और जिसकी मैंने इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था प्रोडक्ट्स पे, आई होप अभी आप सभी को वो वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा मेरा वो वीडियो, आप सभी ने देखा होगा, लाइक किया होगा, आई होप। ओके, और अगर आपने मेरा नई वीडियो देखा होगा तो जाके ज़रूर देखना, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Okay, so don't waste your time. Let's get started. तो मैंने मेरे फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है एंड ये मेरे हेयर, आप वो देखोगे तो इसको मैंने इसको मैंने घर पे ही, और मतलब कोई मशीन या किसी तरीके से इसको नहीं मतलब किया है। इसको मैंने रात में ऐसे छोटी डालते हैं, जैसे उस तरीके की छोटियाँ डाल के ऐसे क्रिएट करें। आई होप ये अच्छी लगी होगी मेरे हेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मेरे फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है अच्छे से। आज मैं ये फाउंडेशन यूज करने वाले, क्योंकि ये हाई का ऑरेंज है और ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट है। से मैंने अब तक के सभी वीडियोस मतलब नॉर्मल पार्टी वेयर टाइप, नॉर्मल समर इस तरीके की वीडियो, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इंडियन मेकअप लुक ओके। और अब हम यूज करेंगे अपना कंसीलर। तो मैं आज यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी का ये एचडी फाउंडेशन कंसीलर। जहाँ आप इसको पेंसिल की हेल्प से इसको हाइड कर दें। और जहाँ वहीं पर का पिगमेंटेशन हो गया और उसको पेंसिल की हेल्प से कोट कर दें अच्छे से। ब्लेंड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। लिपस्टिक जो कि है मैक्स स्टूडियो की, इसका ये जो फॉन्ट है इसको एज ब्लश
अब इसको वॉश करके इसको ये चल दे। और कभी भी याद रखें कि हम यही इस साइड में आपको ब्लैक और डार्क शेड लगाना है एंड दिस साइड आपको नॉर्मल लाइट ब्लैक शेड लगाना है। कभी भी ये साइड में आपको डार्क शेड नहीं लगाना, मतलब ब्लैक एकदम डार्क ब्लैक नहीं लगाना, लाइट ब्लैक लगाना। मतलब अगर आप प्रोडक्ट लोगे ब्लैक तो सबसे पहले हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे एंड देन जो बचा होगा प्रोडक्ट होगा तो उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। कभी भी लेके प्रोडक्ट डायरेक्टली अपना अप्लाई नहीं करो स्टार्टिंग, क्योंकि इतना अच्छा अगर कोई हार्श लाइन होगी तो उसको अच्छे से पकड़ लिया। सो डन। सो आगे पिंक है, इसका नहीं है तो हम उसी तरीके का कुछ आज ग्लिटर वाला मेकअप यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम अपना बेकिंग पाउडर लेके इसको हम बेक करेंगे। फर्स्ट में इस तरीके का स्पंज लेके इसको अपने आईज के नीचे और जहाँ जहाँ हमने कंसीलर लगाया है इसको वहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव करके वेरी सॉफ्टली हमें इस तरीके से ब्लेंड करना है।
अच्छे से।